igneous rock. Okay, basic information. Let's start with the basic information first. And the igneous rock, that there are two types of igneous rock. One is the plutonic one, and another one is the volcanic one, right? Like that or the melt, and if that comes up to the surface like suddenly, and if it cools all of a sudden, and it forms very small grains, okay, then it will form the volcanic rock. You all know about it. This is the volcanic rock. And if the magma starts to crystallize in the like below the ground, okay, then will it will get time to grow its mineral, to crystallize a minerals much bigger. Okay, so it will grow, so it will be called as the plutonic one. So this is the basic two types of igneous rock. One is the volcanic, another one is the plutonic. We all know about it. The volcanic one, another one is the plutonic one. Okay, so there are actually four types of volcanic, four types of plutonic version. Okay, so we have to know about that rock and the mineral compositions of those rocks. So look at this picture. I hope this is very clear. Okay, इस picture में, so just always try to look what's in the y-axis and the x-axis. So here in the x-axis we are getting this SiO2 composition, right? And in the y-axis there is a percentage of mineral, like the mineral का volume percentage कितना है, ठीक है? So मैंने जो अभी जो बोला volcanic and plutonic के बारे में, so अगर होती less amount of SiO2 है, ठीक है, तो we will get this kind of plutonic rock which will be called as peridotite. ठीक है, तो बेसिकली अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो यू विल गेट द सिलिसिक रॉक, राइट? सिलिसिक रॉक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसमें क्या रहता है? SiO2 का कंटेंट ज्यादा रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट SiO2 कंटेंट, हाई SiO2 कंटेंट, इट्स विस्कोसिटी इज ऑलवेज हाई. So igneous is all about the chain, like you have to connect one with the another one. So अगर इस डायरेक्शन में जाओगे, SiO2 if that is increasing, then you will get more acidic rock. Okay, more SiO2 polymerization will be there, so the rock will be more viscous. Viscosity will also be high in this direction. And one more thing also, like if it explodes, okay, if there is a volcanism, then that will be the massive type of explosion. Okay, so you can say that the extreme volcanism is also could be observed here. Okay. Or you can say the explosion will be higher अगर तुम इस डायरेक्शन में जाते हो रॉक के, ठीक है? तो फिर से we will go back to our rock thing. So rock thing में क्या है कि देखो, तुम्हें you have to remember the volcanic version and the plutonic version. Okay, so volcanic version में एक easy सा trick भी है, मैं बता देता हूँ. You can remember like this: Bador, BADR. So B means basalt, andesite, dacite, rhyolite. So you have to remember this four: basalt, andesite, dacite, and rhyolite. And SiO2 ka content is increasing towards the rhyolite direction. And what are the plutonic version of these rocks? That are, for rhyolite there is granite, and for andesite there is diorite. So granite and diorite, in between these two we are getting granodiorite, right? And basalt ka plutonic version is gabbro. So this is so basic and so important. So you have to remember 448 names of the rock. Their plutonic version, their volcanic version. In JAM, directly questions are asked from these things. Okay. And obviously, ये भी important है. ऐसा नहीं है कि कोमाटाइट पेरोडाइट के बारे में why I'm not talking about. ये भी बहुत ज़्यादा important है. कोमाटाइट is also important for diamond. So ये तो बाद में आ जाएगा. अभी के लिए information के लिए लो. Okay, so the next thing is the mineral composition. What are the mineral composition of these four rocks? So it is pretty clear and pretty, like you can see from the figure itself. Okay, I don't have to explain it. So just try to remember this picture. You have to just like recall it in your brain always. Okay, so it will help you in the exam. क्योंकि exam में directly question आएगा कि कोमाटाइट में क्या क्या मिनरल मिलता है. So in the option there will also be plagioclase, right? Or the anorthite, something like that. Okay, or
amphibole, but you cannot select those ones. Okay, you just have to know that पेरियोडाइट में basically main ingredient है olivine and pyroxene. Basalt में mainly you will get this pyroxene, calcium rich plagioclase, right? And granite में तो सबको पता है basic ingredient होता है quartz and plagioclase or quartz and feldspar, right? So if that is so basic, if that is clear to you all, then we can move to our next topic. Can we? Can we move to our next topic? And Okay. So the second thing. So for the second thing, we'll just directly go into the igneous rocks nomenclature. Okay, ये बहुत ही ज़्यादा important है igneous rocks का nomenclature. So अभी के लिए मैंने देखा है 5 टाइप्स का प्लूटोनिक है, 5 टाइप्स का वॉल्केनिक है, ठीक है. एंड नेक्स्ट हम जो जाएंगे उस प्लूटोनिक एंड वॉल्केनिक जो एक एक टाइप है उसको डिटेल्स में समझेंगे. उसका डिटेल्स रॉक्स में क्या क्या क्लासिफिकेशन आता है उसको हम समझेंगे, राइट? सो we just saw that there were कंटेंट बहुत ही कम है, बहुत ही लेस सिलिका है, मीन्स ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ये एसिडिक नहीं होगा. दिस मैग्मा विल बी सो मच बेसिक, इट विल हैव सो लेस अमाउंट ऑफ SiO2 कंटेंट, ठीक है. सो दिस कोमाटाइट और पेरियोटाइट का जो जो रॉक होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऐसे होता है, ठीक है. बेस्ड ऑन द मिनरल कॉम्पोजिशन उसका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है. सो अगर कोई पेरियोटाइट या क्या कोमाटाइट या अल्टामाफिक भी बोल सकते हो हम, यू कैन कॉल इट अल्टामाफिक आल्सो, ठीक है. मींस जस्ट डिडंट टेल हियर दैट दिस इज माफिक और अल्टामाफिक, ठीक है. अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो फेल्सिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम एंड फेरस का कंटेंट ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट माफिक. एंड इसमें SiO2 का कंटेंट ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फेल्सिक. ओके ओके, जो मैं बोल रहा था पेरियोटाइट एंड अल्टामाफिक के बारे में. सो देयर आर 3 मेन मिनरल्स इन पेरियोटाइट व्हिच इज olivine and orthopyroxene and clinopyroxene, right? This is OPX and another one is CPX, 2-pyroxene, and also olivine. So basically it is also again clear from the picture itself, you just have to remember it. If there is like greater than 90% of olivine in the rock, then we call the rock dunite. And ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जैम के लिए, आई थिंक बहुत बार आ भी चुका है. इफ देयर इज ग्रेटर देन 90% ऑफ olivine, the rock name is, there will be 4 options to available to you and you have to select the dunite. Okay. ओके, अगर तुम्हें ये ट्रायंगल रीड करना नहीं आता तो एक बार मैं ट्रायंगल कैसे रीड करते वो एक बार बोल देता हूँ. आई थिंक पता ही है सबको, बट एक बार जस्ट बोल देता हूँ, ठीक है. ये समझ लो क्योंकि बहुत बार ये ट्रायंगल दैट इट विल अगेन कम अगेन एंड अगेन, सो जस्ट हैव टू नो दैट हाउ टू रीड द ट्रायंगल. ओके, सो बेसिकली ट्रायंगल में 3 एलिमेंट्स होता है, लाइक यू कैन सी दैट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है. तो एक्स अगर इस पॉइंट में अगर तुम हो ट्रायंगल के, so it means that you have 100% of x. Okay, suppose you have a system, उस सिस्टम का 3 कंपोनेंट है, क्या क्या है, x y and z. so इस ट्रायंगल में जिस पॉइंट में तुम हो उस पॉइंट से मैं तुम्हारा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में x कितना परसेंटेज है, हाउ मच इज द y परसेंट, हाउ मच इज द z परसेंटेज, I can get that, right? I can get those percentages. So what is the x percentage? What is the y percentage? So I can get those percentages from this triangle itself. So kaisa? If you are at this point, then x is 100%. If you are at this point, then z is 100%. Similarly, this is also y is 100% at this point, right? But what if you are at this point, at this line? Actually, if you're lying at this YZ line, that means you don't have any x in your system, right? X is 0%. You only have 50% of z and 50% of y. Okay, if you are at this point, let's say it's 10, 20, like this, it's increasing. If you are at this point, then what you can say, like I just told you that this is 100% of z. Okay,
That means you have here at this point, the blue one, 80% of Z, right? 80% of Z, not 100%. And the rest is 20% of Y. Okay. And if you go up, so okay, you will have 10% X. Then again, you will have 20% X. If you go up like this, that means at this point, like at the center, if this is the center, let's assume this is the center, then you have 33%, almost 33% of X, Y, and Z, blah, blah, blah. Okay, so you can just see clearly see that from this line, from this exit line, if you go towards the Y point, then percentage of Y increases. If you do the same from XY line, then percentage of Z will increases. And if you do the same from the YZ line towards the X, then percentage of X will be increasing. ठीक है. So triangle को read करना आना चाहिए. किसी को भी if there is any problem with the triangle, then you can tell now. Okay. This is very basic and it will come again and again. Triangle clear है? হ্যাঁ দাদা। Okay. The stories are also not saying anything, so I will assume that सबको triangle clear है. फिर एक्चुअल सिचुएशन में आते हैं. एक्चुअल सिचुएशन में जैसे ट्रायंगल के एंड में ओलिविन है, ओपीएक्स है एंड सीपीएक्स है. सो ठीक है, तो इसमें अगर ये बहुत ही मैंने तो पहले बोल दे, देयर इज ग्रेटर देन 90% ऑफ ओलिविन, देन द रॉक विल बी कॉल्ड एज डनाइट. Otherwise, if there is greater than 90% of OPX, then the rock will be called as orthopyroxenite. And otherwise, if there is clinopyroxene, then it will be termed as clinopyroxenite. ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंफ्यूजन will be in the Webster, right? So I will be just marking the important rock ones. Just remember those important ones. Okay. So the first important one is Webster, right? You have to remember it. Okay. So how the question will come? So question में ऐसा रहेगा कि तुम्हें ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ठीक है, एंड ये वेबसाइट का जगह ये ब्लैंक छोड़ा जाएगा तुम्हारे लिए, एंड चार ऑप्शन विल बी देयर एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन. ठीक है. सो बेसिकली इस ट्रायंगल जैसा भी है, इसको अपने दिमाग में छाप लो. ठीक है. सो ओके, सो द वेबसाइट इज द इम्पोर्टेंट वन, जस्ट राइट. सो इसमें वेबसाइट में क्या होता है, देयर इज नो or the 5%, maybe 5% of olivine or the 10% maybe. Just we'll get it from here that ये कितना परसेंटेज में है, जितना परसेंटेज ओलिविन में है उतना परसेंटेज ओलिविन रहेगा वेबसाइट में. बट बेसिक द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोजिशन ऑफ वेबसाइट इज ओपीएक्स एंड सीपीएक्स, राइट. ओके, देन अगर 40% ओलिविन हो गया वेबसाइट में, सो इट विल बी कॉल्ड एज ओलिविन वेबस्टर, राइट. Okay, so this is important, Webster, right? Acha, next thing, the three rock, which is important and always come into exam. The three rock is Herzbergite, Lazulite, and Whale-like. Okay. So if there is olivine, just remember this: if there is olivine plus OPX, then it will be called as Herzbergite. If there is olivine plus CPX, it will be called as Whale-like. And if there is olivine, OPX and CPX, ठीक है, at this this percentage, so it अगर directly अगर ये triangle आ गया and blank छोड़ दिया, तो you can say that this is lazulite. अगर if there is the percentage given, then they will ask the question like this, that if olivine percentage is between 40% to 90% of olivine, ठीक है, plus अगर OPX and CPX is also there present, OPX present plus CPX present, ठीक है, then the rock name will be surely so three rock, these three rocks are so important. Herzbergite, if there is OPX, if there is clinopyroxene, then whale-like, and if there is both the pyroxene, okay, with greater than 40% of olivine, then the rock will be named as lazulite. Okay, चलो तो ये तो रहेगा ही, ठीक है. सो हम थोड़ा आगे जाते हैं.
थे, तो ठीक है, ये 40% मॉडल, ठीक है। अच्छा अच्छा, और एक चीज कि ये जो परसेंटेज होता है इसको हम मोडल परसेंटेज बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज द मोडल परसेंटेज, नॉट द वेट परसेंटेज बेसिकली। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोडल परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज, क्योंकि मोडल परसेंटेज इज द वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, एंड वेट परसेंटेज तो मास से आता है, ठीक है। So there is very basic difference between modal percentage and weight percentage. So it will come. I will come to this gradually. Okay. So next हम ultramafic से felsic के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। So we just understood about the ultramafic rock. Next the gabbro or the basalt, ठीक है। So gabbro और basalt के classification के बारे में जानेंगे. This is gabbro or basalt. तो okay, इसमें मेन मिनरल क्या है? We just saw that there is plagioclase, there is also pyroxene. It's not mentioned whether it's OPX or CPX. It's just pyroxene, and another one is the olivine. ठीक है. So if there is plagioclase and pyroxene, then obviously it is plagioclase bearing ultramafic rock. ठीक है. So इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसमें बस यही वाला इंपॉर्टेंट है, मेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि there is difference between troctolite versus tonalite. ये आएगा, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टोनालाइट अलग है, मैं टोनालाइट में बाद में आता हूँ। टॉक्टोलाइट ये वाला कंपोजिशन से टॉक्टोलाइट बनता है। एंड गैब्रो, ठीक है। सो देयर इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन गैब्रो एंड नोडाइट, ठीक है। इफ देयर इज प्लेजियोक्लेस प्लस, लुक एट दिस वन, ठीक है। इफ देयर इज plagioclase plus OPX orthopyroxene, then we call it nodite. If there is plagioclase plus CPX, then we call it gabbro, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा था plagioclase plus OPX, plagioclase plus OPX means nodite, and plagioclase plus CPX, clinopyroxene, then the rock will be gabbro. This is really important, ठीक है। ओके, बाकी जो ये दोनों है गैब्रो विथ हॉर्नब्लेंड, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक्स है, यू कैन रीड बाय योर ओन, ठीक है। सो अभी तक यू आर स्टडिंग अबाउट द माफिक, अल्टा माफिक, सो नाउ वी विल बी रीडिंग द फेल्सिक वन, ठीक है। सो फेल्सिक में क्या क्या, रॉक में क्या क्या मिनरल इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो, इट्स सो बेसिक दैट देयर इज क्वार्ट्ज, देयर इज फेल्सपर, फेल्सपर मींस alkali feldspar, right? Alkali feldspar, there is plagioclase, right? And also feldspathoid, feldspathoid, not always, क्योंकि ये opposite है quartz का, opposite of quartz. If there is feldspathoid, then there won't be any quartz. If there is quartz, then there won't be any feldspathoid, ठीक है। So you also have to remember what I just said, okay? क्योंकि quartz and feldspathoid, these are the opposite term. If one is there, another one will won't be there, ठीक है। This is a written rule. Okay, so next the key by PF, right? This is for फेल्सिक, I just say फेल्सिक। ओके, सो फेल्सिक के लिए चार मिनरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्सपर, प्लेजियोक्लेस फेल्सपर एंड फेल्सपैथोइड, राइट। सो अगेन इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूएपीएफ डायग्राम बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है। दिस इज एल्कली फेल्सपर, दिस इज प्लेजियोक्लेस, राइट। And if your rock is falling below this line, below this 5% of quartz line, that means the question will be like this: if below 5% quartz, ठीक है, and if there is 10 to 35% of plagioclase, ठीक है, then what will be the name of the rock? So the name of the rock will be cyanide, right? You all know that how to read the triangle now. Okay, so इसमें जो जो important है, I am just marking them. This cyanide one, monzonite one, ठीक है, and monzodiorite one. So diorite, this is all diorite. If there is greater than 90% of plagioclase, then diorite, gabbro, anorthosite, it's all the same. We just can't differentiate between them. We just call it, we just name these three together.
Okay, if the amount of quartz increases from 5% to 10, every name will be same. Just quartz will be added to the name. So it will be quartz cyanide, quartz monzonite, quartz monzodiorite. And this granite one, this is so basic that where granite lies with how much percentage you have to remember this granite. Okay, so I was just talking about this tonalite. Okay, so this tonalite is obviously different from troctolite. So now you tell me that you can see that tonalite percentage kitna hai. If there is quartz and plagioclase, no alkali feldspar, or maybe like 5% or below 5% of alkali feldspar. If there is quartz and plagioclase, then the rock will be tonalite. Okay. So now you tell me what is the troctolite composition. I just told about troctolite composition. Anyone? क्योंकि टोनालाइट का composition क्या है? Quartz plus plagioclase. So what is the troctolite composition? Olivine and plagioclase. Olivine plus plagioclase, right? Yes. Olivine plus plagioclase. So question will be like that. But you have to remember. Okay, tonalite and troctolite. Okay, so this granodiorite is also important here. Granite and granodiorite and tonalite. Two more things are important here. So I just talked about feldspathoid, right? This is feldspathoid. There is feldspathoid, then there won't be any quartz, right? So that means कि and ये जो